रामः बालः नृपः शाला लता माला वनम पुस्तकम धनम. Classify the above nouns in masculine, feminine and neutral gender. In Sanskrit, some nouns ends with vowel. Nouns ending with vowels are called vowel ending, and ending with consonant are called consonant ending. For example, Van, Bala, Shala, etc. are vowel ending, while Bhagvat, Vak, Marut, etc. are consonant ending. Clear? In Sanskrit, cases of each noun are singular, dual and plural. Means ekvachan, dvivachan and bahuvachan. Try to understand the following illustrations. Keep in mind that declensions which are mostly used in communicative language are in bold letters. Ram, masculine ending in a. ये दिए गए हैं, इनको बोलते हैं रूप, राम के रूप है. ये जो फर्स्ट आपको बताया गया, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, तो ये आपको लर्न करनी है टेबल. उसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस आप बना सकते हैं. ये विभक्ति है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन. तो रामः रामो रामाः, रामं रामो रामान्, रामेण रामभ्यां रामैः, रामाय रामभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु, हे रामो हे रामः. तो ये आपको लर्न करनी है, राइट एंड लर्न. तो राम ending in I is a masculine noun from the declensions of Bal, Nrya, Makar following those of Ram. आप ये जो राम के हैं, तो ऐसे ही आप बाल के, नृप के, मकर के भी सेम बना सकते हैं. बाल मीन्स बालक. बालक का, जैसे बालक का बनेगा राम की तरह ही, बालकः बालको बालकाः, बालकं बालको बालकान्, बालकीन् बालकभ्यां बालकैः, बालकाय बालकभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालकाः. हो गया. तो एक लर्न कर लेंगे तो बाकी आप इसी की तरह लिख सकते हैं. एंड नाउ एंडिंग इन आ, फेमिनाइन है, बाला. बाला बाले बालाः, बालं बाले बालाः, बालया बालभ्यां बालभिः, बालाय बालभ्यां बालाभ्यः, बालायाः बालभ्यां बालाभ्यः, बालायाः बालयोः बालानां, बालायां बालयोः बालासु, हे बाले हे बाले हे बाला. Form the declensions of Shala, Mala, Sita according to Bala. बाला की तरह आप शाला, माला, सीता ये सब भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं. And now ending in a, neutral noun 1. Male, female and neutral नाउन. तो इसमें वन के रूप में वनम वने वनानी, वनम वने वनानी, हेवन हेवने हेवनानी. मीन्स ये जो वन का रूप है ये भी बालक के, राम के रूप की तरह ही है. क्लियर? राम के रूप की, सिर्फ प्रथमा, द्वितीय और संबोधन ये 3 लाइन्स चेंज हैं, बाकी राम की तरह हैं. बाकी की जो लाइन्स है, क्लियर? ये 3 लाइन्स सिर्फ चेंज करनी है आपको, बाकी सेम रहेंगी. The remaining declensions will be according to masculine noun. Form the declensions of पुस्तक, फल and पात्र according to 1. फिर आप
इसके वन के अकॉर्डिंग पुस्तक, फल, पात्र के भी लिख सकते हैं. If the above declensions are learned by heart and declensions of other nouns are formed in the same way, communications in Sanskrit can be done easily. वो आप सब लर्न कर लीजिएगा. You can also use Sanskrit language easily using the declensions of such type of nouns. Sometimes we see in Sanskrit the declensions like sah, sa, te, aham, mam, tau. Do you know these declensions? Find out and make the note of such type of sentences in which these declensions are used. For example, sah kridati, aham khadami, etc. The form which is used in place of noun is called pronoun. Asmat, yusmat, ka, esha, esha, etc. are included. Case declensions of pronouns are formed this way. Pronouns. I. अब ये pronouns के हैं. Singular, dual and plural. एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन इन संस्कृत लैंग्वेज. तो फर्स्ट है अहम. अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आवियो अस्माकम. अहम, आई, both of us, right? And we all. Mom, yes, me, to me. Both of us and us. Mum means my, both of us, our, ours. And you pronoun. Tvam yuvam yuyam, tvam yuvam yusman, tav yuvyo yusmakam. You, both of you, and you all. To you, to both of you, to all of you.